Yes, sir. So the first photo, I perceived it as an environment outside a college staff room where I'll just start with my story only. Radha was the president of the Women Development Cell in her college. She organized the annual fest of the society with the help of a core team. She took the teacher in charge permission for fund allocation and the activities plan. She sent out digital invites to all colleges of the university to participate in the activities. She delegated the work amongst her team members as per their strengths. She coordinated with the college canteen and arranged for catering service and refreshments for students and teachers. On the day of the event, a large number of students turned up and participated, contributing in the success of the event. Radha is elated and celebrating with her team and teachers. नाउ यू सी, ठीक है, आपने कॉलेज वॉलेज का सीन इंटरप्रेट कर लिया, वो ठीक है. यू हैव टेकन दिस राधा एज अ स्टूडेंट. Yes, sir. ये स्टूडेंट लग नहीं रही. लग रही है, बड़ी लग रही है. Yes, थोड़ी सी like two women are in saris and this one girl is not wearing a sari. So, but yeah, she's not looking like a student, you're right. नहीं देखो, उस जो राधा है तुम्हारी, उसके जो लेफ्ट शोल्डर से पीछे दिख रहा है वो तो लड़का है. Yes, sir. तो नॉर्मली यू विल सी कॉलेज स्टूडेंट गर्ल्स मे बी वेयरिंग सलवार कमीज, नो. Yes, sir. So, I mean, this dress I have not seen for students, साड़ी वाली टाइप. देखा आपने? No, sir. नहीं है ना? No, sir. तो ये जो था कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन में इशू हुआ. हुआ ना? Right, sir. तो ये नहीं करना है. जो दिख रहा है उसके अराउंड ही स्टोरी बनाओ ना. पहले से बनाने की जल्दी में क्यों रहते हो? करेक्ट बात ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब बताओ. ये हो सकता है अब ये जो है, ये टीचर है, ये प्रिंसिपल वगैरह के पास आई है. Yes, sir. अब कोई इशू हो सकता है Right. कि इस लड़के लड़के का कुछ होगा, बात होगी, इसने कुछ अच्छा किया हो सकता है, इसने कुछ बुरा किया हो सकता है, Right, sir. उसके बारे में बताने कुछ आई है. Would be something like that. That's what is coming to my mind on seeing this picture. I realized it later, so that जो पीछे लड़का है उसके expressions are a little What did you say? disturbing. और जो पीछे लड़का खड़ा है from हाँ. her shoulder, I think उसके expressions are not neutral. He seems shocked. Shocked will be a too strong a word. He was little concerned, but that is okay. प्रिंसिपल के ऑफिस में बच्चा आके थोड़ा बहुत हो ही सकता है. Yes, sir. कुछ अच्छा काम किया तो भी अप्रेंसिस थोड़ा बहुत हो ही सकता है ना. बच्चा तो प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गया, जाते ही कहाँ है? Right, sir. क्लास में तो जाते रहते हैं. So on this interpretation of the picture, a story could be made. And in that, this जो background में दिख रहा है, probably another boy and another teacher, they will get ignored because Understood. including them in your story would be difficult. Right. They're just creating the setting कि हाँ ठीक है, मतलब प्रिंसिपल के ऑफिस में आते जाते लोग रहते हैं मिलने मिलने के लिए. Right, sir. तो दैट वे. Understood. Are my inputs adequate? Yes, sir. Understood. Okay, चलिए फिर आगे move. So this is the second picture. This is, I don't think so the setting is in India. So my story goes as Mary organized a get-together party with her cousins at her home. She quickly collected her dress from the tailor and returned home with her sister to make arrangements for the party. She also bought some snacks and soft drinks on the way. She made food for everyone while her sister helped her clean the house. She welcomed the cousins with love. They played karaoke, looked through old photographs, and lived their old memories again. Mary served the food and drinks to everybody, and her cousins helped her out. They all had a good time. She also got chocolates to give them as a return gift to everybody.
Maddie is happy and looking forward to more such plans. दिस शुड बी ओके, क्योंकि वो लग रहा है दोनों लड़कियां कुछ काम वाम करने में लग रही हैं, योर Right, sir. विजुअलाइजेशन की कुछ पार्टी शार्टी टाइप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इट मेक सेंस टू मी, ओके। Okay, sir. उन्होंने ऑर्गेनाइज ठीक ठाक कर दिया, दैट्स ओके। चलो फिर नेक्स्ट। This is the third photo. I'll start with the story. Rama's husband was ill. She was worried about him. However, she didn't give up and took care of him. She gave him medicines on time. She made healthy homemade meals for her husband. Slowly, the health of her husband got better. She encouraged him to go for daily walks as suggested by the doctor and went along. She took him to the hospital regularly for checkups. Eventually, her husband recovered completely. Rama was now happy and thankful for his recovery. Absolutely fine. I have no issues. I mean, you could have, she is in a pensive mood. So Yes, story could have been about her career, your right, husband sir. problem, that also is okay. कुछ ना कुछ मतलब है जिसको ये सोच रही है प्रॉब्लम को और उसको ये रिजॉल्व कर लेगी, दैट थिंग इज ओके। बच्चे की पढ़ाई चढ़ाई भी हो सकती है, आई मीन Right, sir. बच्चा है, हस्बैंड है और अपना करियर है, एनीथिंग यू टेक कुड बी ओके। Sir, I have a doubt here. हाँ जी। So, इसमें the story that I have made is a very simple story. हम्म। Um, but usually I've seen that even from simple photos, people try to make very extravagant stories where some social cause is added, or like the woman is trying to help out the society, or like some government-related scheme is incorporated. So, what is your perspective on that? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। आपने देखा है कि सलमान खान की जो पिक्चर होती है उसमें वो कमीज उतार के फाइट करता है, Yes, sir. और आजकल जो पिक्चरें बनती हैं उसमें वो कौन सी एक लड़की आई है उसका डांस होता है, क्या नाम है उसका, मैं नॉलेज थोड़ी कम, बाहर से आई हुई है एक लड़की ना, नोरा। Nora. नूरा फतेह, हाँ देखो तुम जानते हैं, गुड चैप साहब। अब ये बताओ, वो अब अगर नूरा फतेह होती ही नहीं हिंदुस्तान में तो वो पिक्चर नहीं बनती। Kanzi, sir. अब ये जो पिक्चर बनाने वाले हैं, दे आर इनसिक्योर। इनको पता है कि Right. इनकी पिक्चर घटिया है असल में, तो ये सोच रहे चलो सलमान खान की फाइट से चला देंगे, नूरा फतेह के डांस से चलवा देंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. क्या मैं सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? Yes, sir. तो क्या आप स्टोरी अगर ढंग की लिखो तो आपको ये प्रॉप्स डालने की जरूरत है? No, sir. और हम तो नो फ्रिल्स एकेडमी है। Right, sir. अगर मैं कभी पिक्चर बनाऊंगा, विल यू एक्सपेक्ट कि ये नूरा फतेह अली को मैं डालूंगा कभी? No, sir. डेफिनेटली नॉट। Either I'll not make a movie. If I'll make a movie, I'll make it very sensible, stand on its own legs, and not body legs of Noora Fateh and Salman Khan की fight. Right, sir. Are you getting the point? Yes, sir. तो इन इनसिक्योर लोगों के आइडिया से क्या सीखेगी तुम, मुस्कान बता? Yes, है sir. कुछ I'm सीखने getting का the मतलब point. इसमें? है? No, sir. Are you getting the point? Understood. हाँ, तो जो स्टोरी है अगर वो सेंसिबल आप बनाते हो, यू डोंट हैव टू गेट बॉदर्ड अबाउट सच थिंग्स, and don't get bothered about such things in your long life, because people will keep doing such nonsense because they're insecure, they're incompetent. Right, sir. करते रहेंगे। Understood. हाँ, वो इंटरव्यू देने भी जाएंगे तो एचआर वाले की जागीरी करेंगे, मेरी ड्रीम कंपनी थी एंड ऑल दैट बकवास करते नहीं करते? Yes, sir. True. हाँ, तो फिर उसे है फायदा। No, sir. आई होप यू गॉट माय आंसर। Yes, sir. चलिए आगे। Sir, I think in the picture no husband is visible now, sir. But does it seem like slanting a problem outside the picture? नहीं, देखो ऐसा है, अगर आप मान लीजिए अगर आपको मेरी तस्वीर मिल जाए एंड आई सब एम इन अ सॉर्ट ऑफ नेगेटिव टाइप मूड एंड थिंकिंग समथिंग, तो अब थिंकिंग क्या कर रहा हूँ? it will not necessarily be about only my own career, na, it could be other things. Yes, sir. तो फीमेल के लिए, एंड ये कोई यंग बच्ची तो लग नहीं रही है,
Yes, sir. So husband's problem can be occupying her mind. There's nothing, out of the way about it. It's very normal. Like I said, it could be about her child also. And I said it could be about her career also. Okay, All sir. these three things, I said they're fine. लॉजिक है कि नहीं है इनमें चीजों में? Yes, sir. It was logic. We go by logic. We don't go by कि ये नेहरू ने कहा था. No, not at all. Logic. Got it, sir. है ना? Logic है ना बेटा इसमें? Yes, sir. Yes. Yeah, that. चलो. This is the fourth picture. Raghav was going home when he saw two men misbehaving with a lady. He shouted at them, scared them, and handed them over to the police. He made the lady comfortable by making her sit down and gave her some water. He dropped the lady to her house safely. He later discussed with the society committee how they can make their neighborhood more safe for women. He coordinated with the NCD and got the street lights in the neighborhood repaired. He discussed with the secretary of the society and organized self-defense classes for all girls and ladies in the society. Eventually, the number of cases of misbehave with women in the neighborhood dropped. Okay, I would not say this story is wrong. I would not go for this story. The reason is कि एक जो है means this lady and Raghav were unknown to each other, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. तो एक वन ऑफ में तो उसने उसको बचा दिया. It is unlikely that this girl would be sobbing and all that, in that mood. तो उससे वो कुछ अपने inner thoughts share कर रही होगी. It doesn't appeal to my common sense. तो मेरे हिसाब से ये लड़की इसको जानने वाली होने की चांसेस. Right, sir. नहीं लगता नहीं ऐसा. Yes, sir. तो अब उसकी प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम यंग लेडी की क्या हो सकती है? नौकरी लगना, नौकरी से हट जाना, पेरेंटल प्रॉब्लम, शादी कर देने का प्रेशर, इस तरह की चीजें होती है यंग लेडी की जिंदगी में आजकल हिंदुस्तान में. Yes, sir. उसमें से कोई भी थीम पकड़ लो एंड मेन कैरेक्टर इसमें राघव ही रहेगा, क्योंकि Right, sir. गर्ल सीम्स टू बी इन नीड ऑफ सपोर्ट. Yes, sir. है ना? ऐसा तो लग रहा है ना? आप Sir, I just have हाँ जी बोलो बेटा. one point. इसमें जो lady है उसका we can see that साड़ी का पल्लू it's not in its place and it seems like maybe somebody has misbehaved with her. तो जो आपने स्टोरी यार वो बताई तो है अब उसकी तो बारीकी में जा रही, तो पल्लू वाले तो वो डाल लेती वापस यार. राइट सर. That she is not even conscious of that, it indicates more so that they're well known to each other. अंडरस्टूड. ये तो कॉन्शियस होती ना. यस सर. कॉन्शियस नहीं है. she is let her, she is sharing her thoughts. ऐसा Right, लग रहा है ना? जानने वाला हो सकता है ना. यस सर. It could be wife also, could be girlfriend. राइट सर. Wife can also have problems in the workplace. यस सर. Husband can help her out in that. अंडरस्टूड सर. तो वो भी हो सकता है. Getting the point? यस सर.